Hi everyone, welcome to Aaj Ka Show. We have Amit Kumar Gupta sir with us, and he has very kindly agreed to discuss a very special topic, which is generating alpha in special situations. And this is a topic I think, जो कि it's the pinnacle of investing. I think everybody wants to get into special situations जहाँ पे वो कुछ एक edge हो जो कि अभी बाकी market ने recognize नहीं किया है. And this is the probably the most sure shot way कि अगर आपको एक special situation मिल गई and you are confident about it, तो least risk में you can generate maximum returns is it's the pinnacle of investing, I believe. So which is what we are going to discuss today. Amit sir, of course, he doesn't need any introduction, but I'll still, for the uninitiated, I'll quickly go through. He is not only engineering graduate from Delhi University and MBA in finance from Brisbane, but he is also a charter holder, CWN, and a rank holder in CFP. He has been a business consultant for a very long period and has over a decade of experience in investment analysis and portfolio management. He has set up the research desk for everything from equity to currency to commodity for brokerage firms, and he's also a small case manager and handles PMS. And most importantly, he's a founder and CIO of Trinkerr Capital. So with that, such big badges to his name, I'm really excited to learn from him. And without taking any more space of this session, I'll hand over the mic to sir. And sir, I'm here to learn from you. Yeah, thanks, Vishu. Thanks for having me, and thanks to Trinkerr for inviting me for this session. What we'll do is we'll go through a small presentation on special situation, and then we can, have a chit chat about, any queries or any questions you have. Done. Right. The idea of a special situation is, how to use that special situation or that event to generate alpha or generate, additional returns on the money. When we say, how to describe a special situation investing, we say that, we look into any sort of investments that we can find in the public markets that sort of display some sort of characteristics or have a catalyst event with them. So what could be हो सकता है? It could be spin off, director change, management change, restructuring हो रही है company में. So anything which we think that which can move price to value. Now there are more than 5,000 stocks which are listed on the exchanges. But ultimately, what is going to move any stock's price is the one that catalyst event. So we'll start and we'll see, how these events can be utilized and how we have utilized them in the past. Now, a standard disclaimer before we start, any stocks which we are going to discuss, and we are going to discuss a few stocks. So any stocks which we discuss is not a investment advice. So it's purely for illustrative and example purposes. So please do consider a financial advisor before you actually make any investment decisions. We may have positions, currently as well, may have recommended to my clients also. Being SEBI-registered, we have to follow certain norms. So none of the stocks which I am going to discuss will be our investment recommendation. So I think, which was already talked about my background. I've come from a consulting background, ventured into equity market full time from 2012. You can see on the screen some of the brand where I have consulted before. What we are going to do is we are going to talk only about the listed companies, so not including the unlisted ones or private equity investing. That we are not going to do. So the scope of this presentation is more to do with the investing in public equities, how to do special situation in them. Can it provide a style diversification? What is our framework for identifying these stocks in special situation? And why this style of investing might grow? What are the risks associated with it? What are the limitations of this?
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. Uh, so, first question is that why use a special situation form of investing? So, for a lot of people, the value investing is very difficult to practice over a long period of time. You buy a stock which is undervalued, you hold that stock for a very, very long period of time till it becomes, extremely overvalued or till you find any issues in the business model. So, value investing is a lot to do with behavior. You have to buy right and sit tight for a very, very long period of time. So there are, holding capacity concerns कि आप कितने टाइम उसको होल्ड कर सकते हो और नेगेटिव रिटर्न और मे बी वेरी लिमिटेड रिटर्न. सो अगर कोई स्टॉक 100 का 500 रुपये होता है तो उस पर बीच पे काफ़ी सारा टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है, समटाइम्स 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 2 ईयर, ऑल्सो मोर देन दैट ऑल्सो. जब आप उसको नेगेटिव रिटर्न्स के साथ आप उसको रख सकते हो या बहुत ही कम रिटर्न्स के साथ आप उसको होल्ड कर सकते हो. लाइक अभी करंट में एच डी एफ सी ने कोई रिटर्न नहीं दी है 3 साल से, डिस्पाइट द मर्जर भी हो गया, नया मैनेजमेंट भी आ गया, उसके बाद भी उसने कोई रिटर्न नहीं दी है, मेजर रिटर्न इन 3 साल में, बिकॉज वो एक बहुत ही हाई वैल्यूएशन जो थी 2019 में, वहाँ से वो डी-रेट हो गया है. सो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रो भी कर रहा है 20%, बट स्टिल वो वैल्यूएशन डी-रेटिंग की वजह से हो गया. तो यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी इन्वेस्टर की, वो दैट कम्स इनटू द पिक्चर. जिसको वो इशू है कि वो होल्ड नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग एक्चुअली बेस्ट है, बिकॉज उसमें टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होता है. Secondly, there could be possible emergency requirements. COVID taught us that, you can suddenly, the world can come to a standstill and you need money for your basic expenses also sometimes. So it taught us the importance of trading in and out of your stocks also. Secondly, you can use it as cash equivalent. So, for example, if the markets are very overvalued, then you can put the money in special situation investing. It takes usually 3 to 4 months for a demerger to happen. So at least if the market is crashing in that 3-4 months, the market is not doing well in 3-4 months, still you are not losing money, and in fact it is deployed in a stock where the special situation is happening, where the demerger is happening. So you're not actually losing value on your money. So that's why, a lot of people use it as a style diversification in your asset allocation. So आप equity में जो आप allocation बनाते हैं, you can have a value investing, you can have a momentum investing, and you can have a special situation investing. So these are some of the books, if somebody is interested in reading about special situations. Actually, Morris Schiller, who is a US-based investor, that he was the special situation guru, you can say. So he used to write very often that special situation is you take out the risk but retain the romance of equity investing. So you have the operational control in terms of growth which is happening, and still you are playing that special situation as an administrative control. So that is the four-part formula which we follow. There has to be a corporate action, merger, demerger, acquisition, delisting, stake sale, management change, takeovers, हो सकते हैं. Like previous years में हमने सोबिन फार्मा का डीमर्जर किया था, जो कि एक मल्टीबैगर बना था. माइंड ट्री का होस्टाइल टेक ओवर हुआ था फ्रॉम L&T मैनेजमेंट, जो कि अभी रिसेंट में माइंड ट्री और L&T आई का L&T इंफोटेक का मर्जर हुआ है. सो वो एक कॉर्पोरेट एक्शन जरूर होना चाहिए. तो हमारे फ्रेमवर्क पे स्पेशल सिचुएशन तभी बनती है जब उसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है. सेकेंडली, वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो. क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी र्यूमर्स भी मार्केट में होते हैं, बट अगर वो र्यूमर्स पे हम रिएक्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है. हो सकता है वो साल में, मतलब 3-4 साल उसमें कुछ ना हो स्पेशल सिचुएशन.
लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली अब रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का डीमर्जर होना है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और वो पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मर्जर कब होगा आज की डेट पे भी हमें पता नहीं है। सो जो कॉन कॉल्स ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, मैनेजमेंट के पब्लिक इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ से हम आइडिया लेते हैं कि ये स्पेशल सिचुएशन कब एग्जीक्यूट करनी है या कब उसमें पोजीशन एक्चुअली डालनी है। कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं उसको कंपनी को ट्रैक करने में, और उसके बाद भी पोजीशन हम डालते हैं। सो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। सो फॉर एग्जांपल मैग्मा फिनकॉर्प एक एनबीएफसी कंपनी थी जिसने हिंट दे दिए थे पोटेंशियल टेक ओवर के, क्योंकि 2018 एनबीएफसी क्राइसिस में काफ़ी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी क्रैश हुआ था, बिजनेस भी डाउन हो गया था, और दे स्टार्टेड गिविंग हिंट्स दैट they want someone to acquire, and eventually पूनावाला फाइनेंस ने उन्हें टेक ओवर किया लास्ट ईयर, और इवेंचुअली वो स्टॉक भी फिर काफ़ी बढ़ गया था। सो थर्ड जो इसमें चीज़ होती है कि जब हम किसी स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न पता होती है, कि कितना हम रिटर्न मिलेगी और कितना हम रिस्क ले रहे हैं। एंड द आइडिया इज कि एक बारी वो मार्केट में प्राइस इन हो गया, स्टॉक में प्राइस इन हो गया, मार्केट में पता चल गया उसके बारे में, एक बार फाइनेंशियल्स में आ गया, तो फिर हम उस पर से एग्जिट ले लेते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो 1:3, 1:2 या इवन ज़्यादा वो पहले से आइडिया होता है अप्रॉक्सीमेटली। और जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में उतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कई बार बिजनेस में एक्सेलरेशन आ गई या डी एक्सेलरेशन आ गई, तो आपको शायद एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग पता नहीं होता कि ये 10x बनेगा या 5x बनेगा। बट स्पेशल सिचुएशन में आइडिया रहता है यूजुअली कि कितना रिस्क रिवॉर्ड क्या है। फोर्थ जो है वो हम ये देखते हैं कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक ना हो, वैल्यूएशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, अंडर कवरेज हो, यू नो अगर वो बहुत ही ज़्यादा उस पर सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं स्पेशल सिचुएशन में। लाइक फॉर एग्जांपल जब टाटा मोटर्स कोविड क्रैश में 70 रुपये आ गया था, तो maximum brokerage houses had a sell rating on it, and in fact it was trading below the liquidation value और करीब 80-85 रुपए थी, और स्टॉक जो है 65-70 रुपए ट्रेड कर रहा था। तो आई थिंक वो एक आइडिया हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है, देन दैट कुड बी अ स्पेशल सिचुएशन। लिक्विडेशन वैल्यू के अगर नीचे ट्रेड करने लगे तो दैट कुड बी अ स्पेशल। सो ऐसे हम 4 पार्ट फॉर्मूला शिलर फ्रेमवर्क से लगाते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और रिस्क रिवॉर्ड शुड बी नोन, एंड देन वैल्यूएशन एंड कवरेज ऑफ दैट स्टॉक। सो इसमें हम जब ये फ्रेमवर्क लगाते हैं तो उसमें फिर हम डिवाइड कर लेते हैं स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म यूजुअली इवेंट बेस्ड होता है, जैसे डीलिस्टिंग हो गई या बायबैक हो रहा है, वो यूजुअली 3 से 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रहता है। मीडियम टर्म हो गया जिसमें मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या स्टेक सेल होना है, तो उसमें यूजुअली 6 से 12 महीने, 18 महीने टाइप्स लग जाता है। और अगर हम ये प्ले कर रहे हैं कि उसमें मैनेजमेंट चेंज होगा और उसके बाद भी एक लॉन्ग ग्रोथ वे है, सो फिर उसको हम लॉन्ग टर्म और डिस्ट्रप्शन के फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी प्लेड अ स्पेशल सिचुएशन इन GMR इंफ्रा, करंटली भी इन्वेस्टेड है, हमने 15 रुपए से वो स्पेशल सिचुएशन के लिए स्टार्ट करी थी, बाय करना स्टार्ट किया था। और हमारा ये था कि इसमें एक बार डीमर्जर हो जाएगा, बैलेंस शीट डीलीवरेज हो जाएगी, फॉरेन स्टेक आ जाएगा, और उसके बाद भी ये 10 साल की स्टोरी है, क्योंकि ये एविएशन सेक्टर जो है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है, और वी आर लाइकली टू सी मल्टीपल री रेटिंग्स ऑफ द स्टॉक। तो समटाइम्स स्पेशल सिचुएशन इज अ ट्रिगर फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग, सो उस केस में हम थोड़ा लॉन्गर भी होल्ड कर लेते हैं, बट यूजुअली हम प्रिपेयर करते हैं 6 से 24 महीने के अंदर, 6 to 24 months के अंदर वी आर गोइंग टू क्लोज द
position. So इसमें the key idea is, as I said before also, it's a event. वो event driven होना चाहिए, opportunistic nature होना चाहिए. Sometimes contrary opportunity भी लेनी पड़ती है, तो वो less known business भी हो सकता है, less popular business भी हो सकता है, इसके बारे में रोज ट्विटर पे बात नहीं हो रही या मार्केट टीवी चैनल्स पे बात नहीं हो रही. And then they can deliver a superior return. So sometimes it requires a leap of faith also. Usually special situation आता हो because there is a potential for misprice. और वो मिसप्राइजिंग किसी भी वजह से हो, चाहे वो ग्लोबल इवेंट की वजह से हो या लोकल इवेंट हो जाए. जैसे नेस्ले के केस में 2015-16 में हुआ था कि वो एकदम से रेगुलेटरी इशू हो गया और एमएसजी कंटेंट ज़्यादा मिला लैब्स को, तो एकदम से नेस्ले बैन हो गया, सॉरी मैगी बैन हो गई और नेस्ले का स्टॉक काफ़ी गिर गया था. तो वो कई बार रेगुलेटरी चेंज हो जाता है या नया बिजनेस मॉडल आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए, सेक्टर डायनेमिक्स चेंज हो जाए, ग्लोबल इवेंट्स कई बार हो जाए. So these kind of things, are very good parameters to identify special situations. Sometimes markets are very slow to, price in these kind of disruptive innovations. So the impact of that change is not known. So that can lead to a gap between market expectations and that actual growth potential. So वहीं पर हमारी opportunity ज़्यादा बड़ी बनती है. अगेन इसमें हम M&A ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं एंड M&A ट्रांजैक्शन बेनिफिट भी करती है कंपनी को, क्योंकि अगर वो कोई भी मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है तो उससे कंपनी की नेटवर्क बढ़ती है, मार्केट कंपटीशन कम होता है, मार्केट शेयर बढ़ाने में एडवांटेज होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन होती है. कई बार टैक्स बहुत बड़ा रीज़न होता है, टैक्स बेनिफिट चाहिए होता है, कई बार लॉस ऑफसेट करना होता है, सेल्स इंप्रूव हो सकती है, मार्केट रीच करनी है. तो M&A ट्रांजैक्शन में ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ दैट M&A ट्रांजैक्शन विल हेल्प इन अ स्पेशल सिचुएशन. So M&As are increasing. We are seeing a lot of even block deals happening currently also. Obviously नई थीम्स भी आ रही हैं. पिछले 3 साल में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी लिस्ट हुए हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है. आने वाले टाइम में EVs और रिन्यूएबल्स और पावर, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई थीम्स आ रही हैं. So ये सब है. So quickly, I'll go through some examples also. These are a little old examples, not very recent example, but because ये complete हो चुकी हैं special situation, तो इसमें थोड़ा understand करना easy रहेगा कि वो special situation कैसे play हुई थी और हमने कैसे उसको identify किया था और कैसे फिर position close की थी. So like एक ये reverse merger था where Excel top tier company थी which was delisted and it was reverse merged into Sumitomo Chemicals. So it became the I think third or the fourth largest agrochemical company in India. So this was in 2019. It was delisted. It was again listed in January 2020. And then just because you bought it on the X date and 5 महीने आप रुक गए, कुछ करने की जरूरत नहीं थी. मार्केट अप डाउन हुआ, आपको कुछ नहीं करना था. 5 महीने बाद जब सुमितो केमिकल लिस्ट हुआ, अगर आपने तब भी बेच दिया तो 50% की रिटर्न, सिंपली ऑन जस्ट सेलिंग इट 3-4 days after it got list. Obviously, as now Sumitomo Chemical has almost 600-700 rupees. So it is done well even after that reverse merger. So इसमें दोनों चीज़ें हैं. अगर आपको सिर्फ स्पेशल सिचुएशन पे प्ले करनी है तो 6 months के टाइम फ्रेम में तो 50% के रिटर्न पे भी आप बुक कर सकते हैं. और अगर आपको वैल्यू प्ले करना है तो ट्रिगर आ गया है, कंपनी बड़ी हो गई है और फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बिजनेस साइकिल अगर अच्छी होगी तो स्टॉक विल ऑल्सो ग्रो विद दैट. सिमिलरली हमने HSIL प्ले किया था, जिसमें HSIL और SHIL में कन्वर्ट हुआ था. अब आई थिंक
HSIL का नाम चेंज हो गया है, AGI ग्रीन पैथ हो गया है. सो अगेन इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और मार्केटिंग बिजनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को अलग कर दिया था. दोनों को अलग कर दिया था. और 3 महीने के 4 महीने के गैप में ये लिस्ट हुए थे. ऑब्वियसली कोविड का फॉल आ गया बीच में, तो थोड़ा पेन हो गया था. But eventually they became, both the companies became sort of 5x, 10x, 5x, 6x from the bottom. So shareholders were rewarded for their patience. Similarly, there was a case of delisting in the Hexa where I think 265 was the floor price of that which was offered during the open offer. And then the COVID happened, so you got an opportunity to buy it closer to 300, 310, and eventually October 20 में delisting हुई 475 पे. So 300 to 475, almost 50-60% का gain हमने लॉकिंग किया था in that. Similarly, एक बहुत बड़ा प्ले रहता है इन द केस ऑफ कि प्राइवेट इक्विटी स्टेक ले रही है. यूजुअली क्या होता है कि कंपनी के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स अगर होती है, डेट ज़्यादा होता है, तो वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो है उसमें माइनॉरिटी या मेजॉरिटी स्टेक ले लेता है. लाइक HCG की केस में हुआ. मैनेजमेंट वांटेड टू रिड्यूस द डेट फॉर 650 crores. सो उन्होंने CVC कैपिटल, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, दे बॉट द 36% स्टेक. So that COVID period, which was a very good period for all the hospitals, they were able to sail through that COVID crisis to eventual profitability. And I think the deal happened at around 120, and now the stock is trading almost at 380 or 400 rupees. So I think this was again one of the special situations which we played. Then there was a reverse merger. I think that reverse merger has finally happened where IDFC is getting merged into IDFC first. But उससे पहले काफ़ी साल पहले ये demerge भी हुए थे. Obviously that did not work out very well. But now, they have sold the AMC business. They have, sold one of their other businesses also, which was based out of Bangalore, and had a stake with the Karnataka government. And now finally RBI has given them approval, so they are reverse merging the stock, and IDFC holding company will get merged into IDFC First Bank. GMR इंफ्रा मैंने पहले भी बात करी कि इसमें दो कंपनीज हो गई है, GMR इंफ्रा एंड GMR एयरपोर्ट्स कंपनी. एयरपोर्ट कंपनी जो है उसमें एक फॉरेन कंपनी फ्रांस की ग्रुप ADP है, उसने स्टेक लिया हुआ है और उसने वही ग्रो कर रहे हैं अब. और ये काफ़ी डीमर्जर से इट फैसिलिटेटेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. दे वर एबल टू रेज कैपिटल, deleverage करी balance sheet. So stock has done well from 50 to it is almost now 60-65 rupees. So these kind of things also happen. Again DLF में जैसे हमने debt reduction का किया था, 40% stake उन्होंने DLF City Cyber City Developers में, 40% stake उन्होंने GIC जो कि एक सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है उसको बेचा था. उससे डेट कम हो गया था, वर्चुअली डेट फ्री हो गए थे अपार्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल डेट. ऑब्वियसली रियल एस्टेट की साइकिल बहुत अच्छी रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं पिछले 3 साल में. एंड द स्टॉक हैज डन वेरी वेल. फ्रॉम 130 इट हैज गॉन टू 500 रुपीज ओनली. सो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं. हम अपना 4 पॉइंट फॉर्मूला जो है फ्रेमवर्क का वो फॉलो करते हैं, स्कैटरबट करते हैं विद इन द इंडस्ट्री. कोशिश करते हैं कि 30% से ज़्यादा किसी सेक्टर की एलोकेशन ना हो. एक डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट पोर्टफोलियो अप्रोच रखते हैं. और पोर्टफोलियोज तभी चर्न करते हैं या स्टॉक्स तभी चर्न करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है. इसमें एग्जिट क्या करना हो कि when the assumption with which we have bought the stock that is are no longer in place. हमने लेट्स से डीमर्जर के लिए कोई स्टॉक लिया है और डीमर्जर कैंसिल हो जाता है किसी वजह से, तो वी विल एग्जिट बिकॉज आवर बेसिक
basic fundamental reason why we have bought that stock that has gone wrong. Secondly, अगर stock बहुत ज़्यादा euphoric हो जाए, बहुत ज़्यादा प्राइस से आगे चले जाए बहुत कम टाइम में, then we know कि इसमें time and price correction होगी, तो we are going to sort of sell it. Yeah, that's it. I think that's it about the presentation. We'll talk about a little bit about FinTech and what we are offering. We are present on small case also. We have our own website through which we offer equity research services, fintechcapital.com, and you can find this us on Twitter and LinkedIn, the two platforms where we are most active. So yeah, this was a small presentation where I wanted to show our special situation is done and how essentially some examples where we have played in the past. Great. Sir, a couple of questions I want to ask. So, first one would be, so you mentioned a very interesting point. I think it was a third point where you can quantify our risk and reward in the four-step process. So, how do you go about doing the quantification part? Would be my first question. Right. So a quantification part usually comes from, what is the special situation. So for example, if a special situation is a delisting play, right? So उसमें quantification करना काफी आसान है, because जब भी delisting announce होती है तो उसमें एक floor price होता है, और book value हम निकाल सकते हैं stock. सो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि अगर फ्लोर प्राइस है तो इससे तो नीचे नहीं हो सकती डीलिस्टिंग, और जो बुक वैल्यू है उससे उसके अराउंड या उससे ज़्यादा ही होगी. सो उससे हमें रिस्क रिवॉर्ड का आइडिया लग जाता है. सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक्सवेयर का केस लिया जहाँ पर 265 वाज द फ्लोर प्राइस एंड वी बॉट अराउंड 300. तो हमें पता था 35 रुपए का रिस्क है, और बुक वैल्यू आई थिंक उस टाइम पे 400 प्लस थी. तो रिस्क रिवॉर्ड वाज ऑलमोस्ट 1:3. 1:2.5, 1:3 था. तो उससे हमें क्वान्टिफिकेशन हो गई कि ये रिस्क रिवॉर्ड जो है इट्स इन आवर फेवर. सो एटलीस्ट 1:2 तो होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड, तभी हम पोजीशन डालेंगे. सो इसमें हो जाता है. फिर सेकेंडली, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डी मर्जर, you know how the companies are getting splitted, किसमें कम वैल्यू जनरेट हो रही है, किस डीमर्ज एंटिटी में ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो रही है, उसमें थोड़ा वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स हम लगा लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है. समटाइम्स क्या होता है कि देयर आर टू कंपनीज, टू एंटिटीज, एंड वन ऑफ देम इज वेरी हेवीली अंडर वैल्यू, और वो वैल्यू अनलॉक हो रही है बाय डूइंग दैट डीमर्जर. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी में स्पेशल सिचुएशन की अपने क्लाइंट्स को सब्सक्राइब किया है. उसमें द total market cap of that company is 350 crores current market cap, और वो डीमर्जर हो सकता है. उसमें दो बिजनेसेस है. एक बिजनेस में प्राइवेट इक्विटी ने जो इन्वेस्ट किया है उसी की वैल्यूएशन 350 है, तो एक्चुअली दूसरा बिजनेस फ्री मिल रहा है. तो वो वहां पर हमें क्लियरली वैल्यू अनलॉक का ट्रेड मिल गया. स्पेशल सिचुएशन हो रही है क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि नया केपेक्स आ रहा है, हम इसको डीमर्ज कर देंगे. जो बड़ी एंटिटी है उसी पे फोकस रहेगा, छोटी एंटिटी को हम इवेंचुअली सेल आउट कर देंगे. तो वो क्लियरली हमारे लिए एक स्पेशल सिचुएशन बन गई, और वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एस्टिमेट करना फ्रॉम अ 12-24 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी आसान हो जाता है. बट जैसे अगर लेट्स से HDFC का एग्जांपल लेते हैं जो रिसेंटली आपने शुरुआत में मेंशन भी किया था सर. A lot of people were expecting जैसे HDFC में कि because the capital size will increase by a lot तो उसमें अच्छा up move आएगा, but eventually what happened was कि वो कुछ taper out हो गया and we see कि stock is stuck there. So how do we actually, taking example of HDFC merger let's say, तो how do I'm not talking about the stock prices की drill down upon that, but जैसे ये merger बहुत न्यूज़ में था, तो उसको आप how do you go about analyzing this merger? Right. So I think the HDFC merger का impact, because you have to understand the size of it, size of the company also. I mean, these are mega large caps, not even large caps. It is the largest bank in India. It has such a heavy weight.
Almost 74% FIs actually hold the weightage in that. So उसमें काफी सारे एक्स फैक्टर्स भी हैं जो कि बिजनेस के अलावा हैं, लाइक FI स्टेक है, इंश्योरेंस स्टेक है, उसमें काफी चर्निंग है, अभी भी है मार्केट। सो मुझे लगता है कि वो चर्निंग सेटल होने में 3 से 6 महीने लगेंगे। सो वो एक टेक्निकल फैक्टर है जो कि अभी HDFC अगेंस्ट जा रहा है। Secondly, we also have to understand that HDFC Bank, especially, was coming from a very high valuation point of view. Like मैंने presentation में भी कहा, it was almost 5x price to book value in 2019. तो वो de-rating हुई है. According to me, that de-rating is completed, but market is not yet acknowledging it क्योंकि ये merger भी हो गया. तो अभी ये merger को absorb होने में and people have to become convinced कि इसमें growth उतनी होगी जितनी HDFC बैंक में थी, which was almost 20% growth year on year. So I think market is not yet convinced. Plus ये technical factors, XYZ index से selling होना, buying होना, ये सब चलता रहेगा अभी 3-4 महीने। एक बार ये सब settle हो जाता है, growth numbers आ जाते हैं, then I think stock will so sometimes you have to analyze the whole situation and just not focus on the special situation to make a decision. Right. Awesome. And sir, next, so I have a lot of questions. Next is which information source do you go by for this? Do you use just NSE के जो circulars आते हैं या फिर some tools like screeners or something? So ये information reliably कहाँ से निकाली जा सकती है? हाँ, so I think the primary source तो वही होता है from NSE exchange notifications basically, NSE and BSE exchange notifications. तो वहाँ पे हम अपने scanners हमने डाल रखे हैं कि whenever a word like demerger or stake sale और merger acquisition, जो keywords हैं हमारे वो हमने डाल रखे हैं, उस हिसाब से हमने filter out कर रखा है. So every day we go through the exchange notification. We keep on analyzing, what are the dates for these special situation to happen, what is the value of these. But इसमें क्या होता है, स्पेशल सिचुएशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की होती है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे कोई भी स्पेशल सिचुएशन हो रही है, स्पेशली डीमर्जर एंड मर्जर, उसमें जो टाइम फ्रेम होता है वो कई बार बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब 2-2 साल तक भी होता है कि आज अनाउंस किया और एक्चुअल डीमर्जर 2 साल बाद हो रही। So for example, we did a special situation is Jindal Stainless और Jindal Stainless Hisar का merger होना था, which is the company now is only Jindal Stainless. Now उसमें अप्रूवल आने में ही ऑलमोस्ट 1.5 साल लगी, 18 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया, बिकॉज वो प्रोसेस बहुत लंबा है और वो बेसिकली काफ़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से जाता है। आपको NCLT में अप्रूवल लेने होते हैं। अब अगर कंपनी 2 जगह पे लिस्ट है ऑपरेशंस, लेट्स से कैलकाटा में है और बैंगलोर में, आपको दोनों NCLT से अप्रूवल लेने हैं, आपको ROC में अप्रूवल लेना है, आपको एक्सचेंजेस में अप्रूवल लेना है, SEBI का अप्रूवल लेना है, अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो RBI का अप्रूवल चाहिए, अगर इंश्योरेंस की कंपनी है तो IRDAI का अप्रूवल चाहिए। तो एक मल्टीपल लेयर्स होती हैं अप्रूवल्स, तो वो अप्रूवल्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा मेजर करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी स्टॉक को वैल्यूएशन कम है तब ले रहा हूँ तो मैं उसमें फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर कर सकता हूँ। लाइक फॉर जिंदल स्टील में 100 रुपये पे बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 6 महीने एक्स्ट्रा भी लग रहे थे तो कोई बात नहीं, रिटर्न बहुत आएगी। 800 का वो 400 हो गया, तो 4x हो गया। तो जो क्वांटिफाई हमें करना होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम क्लाइंट्स के लिए उसको मिनिमाइज कराएं। एंड सर आपने कुछ तो फैक्टर्स आई थिंक ऑलरेडी कवर की, सैनिटरी फैक्टर्स, जैसे आपने बोला कि 30% से ज़्यादा किसी सेक्टर में एलोकेशन लंप साइडेड नहीं होना चाहिए, बट इसके अलावा व्हाट अदर सैनिटरी फैक्टर्स वुड यू बी लुकिंग एट, सच एज मतलब आप पी ग्रोथ हो गया, PG रेशियो, या फिर मार्केट कैप की स्मॉल कैप्स को अवॉइड करें लिक्विडिटी की वजह से, या कुछ इससे के और कौन से फैक्टर्स आप देखते हो कि जो आपको कि नहीं इसमें ये फैक्टर, मेरी टॉप 5 फैक्टर्स
जो देख के आप सोचते हो कि यार इसमें रिस्क वर्थ इट नहीं? Yeah, right. So I think one of the factors is we generally avoid micro caps in this because उसमें liquidity का काफी issue हो जाता है. And if somebody wants to build a larger position in excess of, let's say, even 10, 20,000 shares, and then that is not really possible in micro caps, even though a special situation can be very tempting to buy. So we generally avoid that because of the liquidity factor. Second is थोड़ा management study तो करना ही पड़ता है. Because sometimes the management becomes a big roadblock in a special situation. So for example, recently where we wanted to buy a special situation, but there was a conflict between the promoters. Promoter family के बीच में ही conflicts चल रहे थे. तो उसकी वजह से स्टॉक तो अंडर वैल्यूड था, स्पेशल सिचुएशन भी थी. But we were sure कि a stock may not give the returns as required if this conflict continues. And in fact, bull market में वो stock ज़्यादा चला भी नहीं था. But as soon as that conflict got resolved, the stock re-rated. So stock got re-rated. And in fact, उस ग्रुप के सारे stocks actually 4x 5x हो चुके हैं पिछले एक साल. ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 की. अगस्त में उनका जुलाई में उनका रेजोल्यूशन हुआ. अगस्त में उन्होंने एनालिस्ट मीट्स किए. And after that, all the stocks have done 4x 5x from that price. So sometimes we have to be a little cautious about what the management is doing, and little bit pay more attention to reading management con calls, reading a little bit over the internet, and understanding what the management up to and how quickly they can actually execute that special. एंड आपने शायद एक सर वो भी बनाया था कि बिकॉज स्टॉक्स HDFC का एग्जांपल फॉर इंस्टेंस वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था, विच इज वाई स्पेशल सिचुएशन बनी, लेकिन अभी तक वो प्ले आउट नहीं हुई. तो डू यू गो बाय जस्ट मतलब व्हाट फैक्टर्स डू यू यूज टू डिटरमिन, इज इट पी रेशियो, इज इट मे बी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू, या कौन से फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू टू सी कि ये फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? So yeah, I mean, वो हर सेक्टर का अलग अलग रहता है. PE is not a one parameter for all the industry. So for example, in the case of financials, we like to see price to book value. In the case of let's say FMCG or consumer, we would like to see what are the peers are trading at. उनकी PE रेशो क्या है. कई बार कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनमें PE रेशो ज्यादा ही होती है, लेकिन FMCG में the companies are trading at 40 PE also and 80 PE also. Nestle has always traded, expensive only 60, 70 PE. So, for example, in autos, Eicher Motors have always traded more than Tata Motors. So, I think वो PE ratio या valuation की call जब होती है, वो that depends from sector to sector. Plus, we have to also see the growth potential of that company. The cycle of that sector is a downturn. Then even if the stock is undervalued, it may not give out the returns. But अगर वो up cycle है, then even if you are buying a slightly expensive, then also there is chances of re-rating and stock doing well over a period of time. So it's not a straight call of just looking at PE ratio. It's a combination of using all your financial ratios and valuations and the growth cycle in that sector to arrive at a particular decision. And sir, do you also keep an overall stop loss kind of thing in this? कि maybe the story has not fully, एक तो risk आपने बताया कि of course opportunity cost रहता है, capital locked in रहता है जब तक वो resolve नहीं होता. But then let's say कि story अभी तक वो play out नहीं हुई है, but the stock price is going down. तो do you keep कि ठीक है नहीं, इससे ज़्यादा risk नहीं लेना है इसमें, या फिर story पे dependent रहेंगे वो? Right. So I think that's a very good question that we have faced, few times where the stock has gone down, irrespective of the special situation happening or happening within the constrained time. But because market kharab ho gaya, to stock गिर गया. So this happened during the COVID phase. So उससे पहले we were playing two demergers. One, I think I showed it on the slides also, where the HSIL and SHIL.
Another was similarly was Greenply and Green Panel का demerger हुआ था. तो उसमें दोनों में केसेस में ये हुआ कि वो जब लिस्ट हुए के बाद कोविड हो गया एंड द स्टॉक एक्चुअली फेल. तो वहां पर क्योंकि आई मीन दीज आर बेसिकली रियल एस्टेट एंसेलरी स्टॉक्स, तो रियल एस्टेट ही बिक नहीं रही थी, तो फिर रियल एस्टेट एंसेलरी स्टॉक्स क्या. सो हमारी स्पेशल सिचुएशन ठीक थी, स्टॉक हुआ भी. So वहाँ पर we have to take a call कि whether we should exit or we should actually double up. Allocation बढ़ा लें आप. जिसको हम मार्केट की भाषा में एवरेजिंग भी बोलते हैं, या हम अपनी फाइनेंशियल लैंग्वेज में भी बोलते हैं that we are increasing the allocation to the stock. So in दोनों cases में we did basically increase the allocation. When the stocks were down 30-40%. So it was painful for 1 year post the demerger. बट जब साइकिल टर्न हुई, मार्केट खुल गए कोविड के बाद, रियल एस्टेट से सेल आउट होने लगी अच्छे से. ऑब्वियसली इंसेंटिव्स भी बहुत सारे थे रियल एस्टेट उस वक्त सेल करने के, स्टैम्प ड्यूटी वेवर्स एक्सेट्रा. सो स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में 3x 5x हो गए. तो आप ग्रीन पैनल का चार्ट देखोगे तो कोविड के टाइम पे आपको डिप दिखाई देगी, पर उसके बाद इट हैज बीन वन वे. सिमिलरली विद HSI, LSHI. सो आई थिंक why the stock is going down and whether it has the ability to bounce back within a short period of time or short span of time, that is important to understand. There have been cases also like where we have taken the hit, 30% hit. कि वो डीमर्जर हो गया, लेकिन उसके बाद बिजनेस में कुछ चेंज हो गया या बिजनेस साइकिल खराब हो गई, तो वहाँ पे हमने 30% लॉस पे एग्जिट भी किया. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक कि बिजनेस साइकिल क्या है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग जा रहा है स्टॉक, जो हमने रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किया था उसको ब्रीच कर रहा है. अगर वो सब होता है देन वी हैव टू टेक इट. नेक्स्ट सर, आई थिंक काफ़ी लोग जो ये कोशिश करी है, मतलब इस मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है कि स्पेशल सिचुएशंस बनती हैं एंड पीपल ट्राई टू मे बी टेक बेनिफिट ऑफ सच स्पेशल सिचुएशंस. Often they turn out to be some stock being operated by operators कि वो बनाई and then वो उनको ट्रिक करके टॉप पे they made people buy कि ये स्पेशल सिचुएशन है, it's gonna go up, and then वो eventually लोग फंस जाते हैं, retailers get stuck there and जो operator है वो अपना बेच के उनको माल निकल जाते हैं. So can you give us some red flags जो इस situations में maybe so people generally, retailers go by news कि ठीक है news आई and then they saw this कि this is happening and वहाँ पे they got invested but then they got stuck there. So some red flags to avoid, to identify कि yes, this is a genuine special situation versus this is not a genuine special situation and this may be a trap. See, I think one of the criteria which we use is that we don't go by gossip or rumor or what is floating around on social media or WhatsApp or Telegram. What we have to hear it from the horse's mouth. So मैनेजमेंट को खुद आगे उस स्टॉक के बारे में या स्पेशल सिचुएशन के बारे में बोलना चाहिए. चाहे टीवी पे बोले, चाहे वो अपनी कॉन कॉल्स में बोले, कहीं पर वो होना चाहिए. उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, यार मैनेजमेंट ने ये कहा है. इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो मैनेजमेंट इज बेसिकली मिसलीडिंग. दैट इज अ value call we have to take out. That is a judgmental call we have to take. But the first thing to identify is that a special situation is being talked about by the management itself. Because if there is a genuine value unlocking happening in a stock or in a special situation, then it makes sense for the management to come about and talk about it. So that is so if the management is not talking about it and only the social media is talking about it, or a certain segment is talking about it, in this case maybe a retail segment, then that's a red flag, and then we will try and not to venture out into that. But if the information is public, that has been told by the management itself, and one of the biggest tick mark for us is if there is an announcement and actually the management is taking a proactive step and calling up analyst meets or calling up institutional meets that okay, come and meet us, this issue is resolved now and we are doing this demerger,
or this legal case was going on for a very long period of time. Now this is resolved. So now we want to talk about our business. So that for us, that is a big check mark. That this special situation is genuine. And we can actually invest in it if we study and we feel like the business. So for me, having some sort of public information is important. Sometimes that public information is hidden, so that becomes hidden in the sense that it is not very well talked about, among the retailers. So that becomes a very good chance of making good money on that space. Awesome. Two, three more questions, sir. Not directly related to special situations, but general investing. Regarding risk management through diversification, what do you think? Is there an ideal number of stocks that a retailer maybe should have in his portfolio? Matlab, it's diversification versus focus करके कुछ stocks में position बनाना. And is there an ideal number for that? And if so, then what would be the ideal spread? And second is ki, in general, risk management ke around in while investing, some tips maybe if you can give. Right. So actually, the risk management is also, a lot of people don't understand, but risk management is also a function of how you are investing. So for example, if you are investing through a mutual fund, then already you are getting a diversification, because most of the mutual fund are investing 50, 60, 80 stocks also. Right. So you are automatically get diversification. So you don't have to buy, let's say, 5 mutual funds to actually get a diversification. You can buy 2 mutual funds and get enough diversification for a particular category. So for example, if you want a large cap, mid cap and small cap, you just buy 3 mutual funds pertaining to large, mid and small cap. That will give you the enough diversity. But if you're doing a direct stock, then again, it depends how you want to create wealth. Because what happens, what I've personally seen is that if your capital size is very low, let's say 5 lakh, 10 lakh, and if you're buying 20, 30 stocks, then there is you don't have the bandwidth to, track all 30 stocks. Even if you are taking the help of an advisor, you're picking and choosing stocks and not really fully deploying all the money into the stock. So I think if you have a decent capital, let's say 20, 25 lakh, then it makes for you to take the help of an advisor, especially if you are doing a direct equities. And, you can do your due diligence to identify that advisor and to, see his track record, etc. And then after that, you can actually, invest according to his pick and your own due diligence. So in that case, I think you can start with, let's say, 15 stocks, and maybe over a period of 3 to 5 years, you can move to about 20, 25 stocks. But I think more than 25 stocks, that just becomes a crowd. And eventually you might have, certain stocks which are down, you're holding just because they are down, and not necessarily deserve a position in the portfolio based on business fundamentals and valuation. Because this is the tendency which happens a lot in the retail portfolios, that in one cycle you buy the stocks at the top, then the cycle basically crashes. So you are stuck with a lot of stocks in the down cycle, and then you get some more money, so you buy some new stocks, not the same stocks. So eventually your portfolio becomes a collection of stocks. Okay, it is not backed by any investment strategy. It is just a collection of stock. So that should not happen. So the portfolio number should be ideally between 15 to 25. I think that's a sweet number, depending on where you are at your investing life cycle. If you are at an early stage, then 15 years ago. If you are at a little later stage, you have already been investing for 5 years, then maybe 25. And maybe a general few tips to managing your risk in your portfolio. No, I think in these times of very heavy traction on social media, there is a very manufactured advice also floating around. People, I see a lot of tweets or a lot of LinkedIn posts
where people will give you 25 stocks on a particular theme. For example, we recently railways or defense or smart meters or power. These are very hot themes at this point of time. So people will give you 20 stocks to invest. But the fact of the matter is that you cannot invest 20 stocks, just on a particular theme. Eventually, you need to do active investing and you need to identify the best bets out of those 20-25 names. And if you're running a diversified portfolio, you in any case you cannot have more than 2-3 in a particular theme, more than 2-3 stocks in a particular theme. So I think in this case of very frenzy and mob kind of investing, one needs to be a little bit more patient. Do your due diligence with time and think before you actually put in the position. I think that is the best risk management practice. If you cannot do it yourself, then maybe take a help of an advisor or an analyst who can help you in this. But it's a very important at this point of time not to get carried away with whatever is thrown at you from social media or from various channels like WhatsApp, etc. Because the noise is too high at this point of time. So one need to filter out that noise. And if you can do it on your own, well and good. But if not, then you need to take assistance to filter out that noise. That is your best risk management at this point. And before we close for the day, maybe one final piece of concluding advice from you for our listeners and investing. So yeah, eventually investing comes when you're saving. And saving comes when you have a sort of a pullback mechanism on your personal life, on your lifestyle. Because if you don't have money, you cannot invest. It is as simple as that. If you're saving regularly, then eventually you'll build up a corpus. But if you're spending, you will not be saving. So I'm not saying you don't spend, but maybe it's a good habit to save something and then spend, or have a checklist of what you're going to spend. I mean, in the days of BNPL and all, where it is very easy to get a loan, 4 lakh, 5 lakh, 2 lakh kind of a loan, it's very bad habit to just keep on taking the loans or taking, the best iPhone or the best, laptop going ahead. So those are things are important, but they should not come at the cost of saving. You can reduce your saving if you want to, enjoy your life, or if you want to have certain pleasures in life. But I think one needs to save and invest at the same time. Great. Awesome. This was amazing, sir, but I'm sure we have so much more to learn from you. Please do allow us to host you again and learn more from you, sir. Thank you, Vishu. It was a pleasure, and I look forward to further interaction next time around.